Good morning, classes. How are you all? I hope you all are fine. So, welcome back to your classes. As you have all enjoyed your summer vacations very well and your summer camp also. So, welcome back to your classes again. So, this is our EVS activity class. Which class is it? EVS activity. So, today we will going to learn something new. So for this you need a paper you need a paper, one box covered with black color, one box colored with black cover, and one a roll of a paper. Slightly roll down the paper and stick it well. Okay, and you need sketch pens, one scale. Okay, so take out all your things so that we can start our topic today, which is very interesting for all of you. Okay, so yes, first of all, what we will do, we will do the underlining here. Make a line, make a line here with the help of scale only. Draw a line till the bottom of the page. Make a line in the front also, up to this. Make straight line, all of you. Use sketch colors for linings. Now make a line here also. What we are doing? We are making borders. What they are? Borders. Done, beta? Do it with me only, beta, okay? Then only you will understand that which topic we are studying. First of all, and now what you will do? We will write here heading. Now make a line. Make a line. Yes. Again draw a line so that it can look bold. Drawn, beta? Done, beta? Yes. So write down the topic here, that is T R A F F I C, traffic. TRAFFIC, traffic. TRAFFIC, traffic. Lights. LIGHTS, LIGHTS. What is this? Traffic lights. Yes, what we are going to be do? Traffic lights. You all know about traffic lights? जब हम कभी रोड पे जाते हैं, हम ट्रैफिक लाइट देखते हैं ना और सिग्नल को फॉलो करते हैं. जब रेड होता है तो हमें क्या होता है? वी नीड्स टू बी, हमें रुकना चाहिए. और जब येलो लाइट होगी तो हमें जाने के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए. एंड आफ्टर व्हेन ग्रीन लाइट अकर्स, इट मीन्स now we have to go. So I have taken one box and colored it with black paper. Stick it with black paper. What I have done? I have taken one box and cover it with black paper. Done, all of you? Now what I am going to do? I am going to stick it in the paper here. What I will going to do?
I will going to stick this paper. So with the help of glue, I can stick these papers. Have you take out this box? Have you covered it with black paper? And also one roll. How can you roll it? You can roll like this. Likewise, in the way I am rolling, you can roll it in this way only. Like this. Once again, you can roll the paper like this. Okay, and after that you can put a glue over here and stick this paper. So what we will do, we will put a glue here so that this box can stick on the paper. हम इस पे glue लगाएंगे. क्यों glue लगाएंगे? ताकि ये box हम पेपर पर स्टिक कर सकें. अब मैंने इसके चारों तरफ ग्लू लगा ली है. अब मैं क्या करूंगी, इसको बॉक्स पर चिपका दिया. मैंने यहां क्या करा, इसको ये स्टिक हो गया स्टिक. अब मैंने क्या करा, ये रहा मेरे पास एक पेपर. अब मैंने इस पेपर को किया फोल्ड. Yes, fold. After folding, at the end, what I have done, I have put the glue over here so that this paper can be sticked. Look at this. This paper is sticked now. Now what I will do, I will put a glue here. What I will do, I will put a glue here so that I can make a stand behind it. Yes, look at this. डन बेटा. मैंने क्या करा, अब इसको इसके साथ जोड़ दिया. जोड़ा ना मैंने इसको इसके साथ. आया समझ में बेटा? ये देखो, मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बनाएंगे सिग्नल्स. फर्स्ट सिग्नल इज, yes, which signal? Red. Red signal says stop. Stick here. I have cut it down the paper red and in yellow and in green. Okay, I have cut it in the round shape. You can also cut the paper in the round shape. Now I have stick yellow one, red one. Now I will stick yellow one, and after that I will stick the green one. क्या करा मैंने, पहले मैंने ये रेड पेपर चिपकाया, सर्कल की शेप में मैंने इसे काट लिया. आप किसी की भी हेल्प से काट सकते हैं इसको. यू कैन कट इट विद द हेल्प ऑफ दिस. यू कैन टेक वन कैप and put here and then start it cutting. What I have done, मैंने पहले इसमें रेड चिपकाया, then after yellow and then after green. अब मैं क्या करूँगी, मैंने ब्लैक पेपर को 6 स्मॉल स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है. 6 स्मॉल स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है. अब मैं क्या करूँगी, now what will I do, I will paste a glue here and stick here. I will paste a glue here and stick this here. Next I will take next paper and put a glue on this side and stick here. And after that I will take the next paper also and put a glue over here
and I will stick it here. And on the left side also, I will do it in the same way. Put a glue over here. Stick the paper here. Now, take on the next paper also. Put a glue over here. Stick the paper here. And at last, take on another sheet and paste a glue over here and stick it here. So, what is this? This is our traffic light. What is this, beta? This is our traffic light. And in traffic lights, we follow some rules also. What rules we follow? Yes. Which type of rules? Now, I have taken these types of 4 sheets. 1, 2, 3 and 4. 4 pieces cutted in the round shape. 4 pieces cutted in the round shape. Now, what I will do? Put a glue on this circle. Stick the paper here. Now again, put another circle. Stick a glue on this circle. Stick it here. Now, put another circle. Put a glue over here. Stick it on this side. And put a glue on this paper also, another paper, because I have told you that I have cutted 4 sheets. How many sheets I have cutted? 4 sheets. So, in the 4 sheets, what I have to write? First, हम जब ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं तो हम जब रोड्स पे चलते हैं तो वहाँ पे बहुत अलग अलग जगह पे ग्लो साइन बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स बना रखे होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या आपको करना है और क्या नहीं. जैसे कि पार्किंग, P. What is this? P. अगर P लिखा है तो इसका मतलब आप यहाँ पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही P पे कट लगा है तो इसका क्या मतलब है? आपको यहाँ पर पार्किंग अलाउड नहीं है. देन सम सेज स्टॉप. कहीं साइन बोर्ड्स पे क्या होता है कि स्टॉप, यहाँ पर आपको रुकना है. क्या है? यहाँ पे आपको रुकना है. कई बोर्ड्स पे लिखा होता है कि हमें मोबाइल फोन्स नहीं यूज करने. मोबाइल फोन्स नहीं यूज करने. अब मैंने ये क्या बनाया? मोबाइल फोन. अब मोबाइल फोन को मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया. इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर मोबाइल फोन यूज नहीं होना चाहिए. एंड देन लास्ट इज दैट इज रेस्टोरेंट. ये साइन होता है रेस्टोरेंट का. ये स्पून और फोक है. ये साइन किसका है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है. क्या है? रेस्टोरेंट. RESTAURANT. ये रेस्टोरेंट का साइन है. और ये है नो मोबाइल. किसका साइन है? नो मोबाइल. किसका है? नो मोबाइल. और ये नो पार्किंग. नो पार्किंग. MOBILE PARKING पार्किंग. और ये कौन सा बोर्ड है? स्टॉप का. तो आज हमने क्या सीखा? ट्रैफिक लाइट्स के बारे में. किसके बारे में? ट्रैफिक लाइट्स. ग्रीन सिग्नल क्या बोलता है हमें? स्टॉप. येलो मीन्स स्टार्ट हो जाओ. ग्रीन मीन्स गो. और दिस इज no use of mobile phones. No parking here. This is restaurant and this is stop. So we have made today this. So what you all have to do, you all have to make this traffic lights at your home and send it to me by 2 p.m. and try to utilize all your home items in this. Okay beta? So this much for today's. Okay, bye bye class.